चलिए, लास्ट टाइम जो हमने बात किया था डेट वाज ऑल अबाउट द थ्री पार्ट ऑफ वीपीसी। और अभी हम बात कर रहे हैं लैब। हम एक कस्टम वीपीसी बना के लेंगे। राइट, कस्टम वीपीसी वी आर कंसिडरिंग रीजन सेम नॉर्थ वर्जीनिया। कस्टम वीपीसी, हर वीपीसी का एक नाम है, हर वीपीसी का सीआरए ब्लॉक है। सो नेम व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज द कस्टम वीपीसी। और ना इसका जो सीआरआर है 10000/16। राइट, नॉर्थ वर्जीनिया में 6 जोन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन। We are considering only 2 zones here, US East 1A and US East 1B, right? तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी हम VPC क्रिएट करेंगे, so VPC is going to span over this entire region, meaning all the zones. But here we are considering only 2 zones because when we create the subnets we are going to create somewhere in the zones only. तो हम यहाँ पर ये है हमारा कस्टम VPC। This is a custom VPC, right? In this custom VPC, we are going to create 2 subnets now. One is a public subnet in one age zone, right? CRA block 10010/24, और दूसरा है आपका private subnet in another zone 1B, right? इसका CRA block हम रख रहे हैं 10.02.0/24. Everything is customized. Right. पब्लिक सबनेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितने भी सबनेट हम क्रिएट करते हैं दे आर एसोसिएटेड विद मेन रूट टेबल। लेकिन अभी हम अपनी खुद की रूट टेबल बना रहे हैं, राइट? फॉर पब्लिक सबनेट विल हैव पब्लिक रूट टेबल, फॉर प्राइवेट सबनेट विल हैव प्राइवेट रूट टेबल। ओके, बाय डिफॉल्ट रूट टेबल में लोकल रूट्स होते हैं, राइट? लोकल रूट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट, जिन्हें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐड डिलीट मॉडिफाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दे आर ऑलवेज देयर। एंड बिकॉज ऑफ दीज लोकल रूट्स within the VPC communication is not possible। यानी यहाँ पर अगर ये दोनों VMs अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली, यस वो हो जाएगा, जस्ट बिकॉज लोकल रूट इज देयर। लेकिन अगर आपको बाहर कम्युनिकेट करना है VPC से बाहर, मतलब इंटरनेट पर, देन यू हैव टू हैव इंटरनेट गेटवे। रूट टेबल वी आर एसोसिएटिंग विद सबनेट। रूट टेबल जो है हम हमेशा सबनेट से ही एसोसिएट करते हैं, राइट? और गेटवे जो होता है इंटरनेट गेटवे, दैट वी आर एसोसिएटिंग विद VPC, राइट? इंटरनेट गेटवे इज एसोसिएटेड विद VPC। एक VPC को एक ही गेटवे होता है, जैसे एक सबनेट को एक ही रूट टेबल होती है। यू कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट टेबल्स एसोसिएटेड विद द सबनेट, राइट? एंड हियर पब्लिक सबनेट को अगर रियली मुझे पब्लिक बनाना है, मतलब the resources there in the public subnet should be able to communicate to the internet, तो वो कब होगा? If suppose we have the root, so here we are going to add the root in the public root table, right? उस root को अपन बोलेंगे default root। So we are going to add a default root in public root table, right? We are going to forward all the traffic destined for the internet towards this gateway। इंटरनेट को जाने वाला जितना भी ट्रैफिक है, it is all going to be forwarded towards this gateway, right? By adding the default route, traffic will be forwarded towards this gateway. And anything which is forwarded towards this gateway, meaning internet, that will go to the internet. Okay. Private subnet, it's going to be really private, right? Kyun? Because it cannot communicate to the internet and vice versa. क्यों नहीं कर सकते हैं communicate? Because it doesn't have the root. If suppose you don't add the root here towards this gateway or towards this internet, so communication नहीं होगा, right? Even if suppose we have the public IP address, यहाँ पर इसको अपन नाम दे देते हैं public VM,
This is public VM, and this is private VM, for example. Right? Public VM can communicate to the internet because it is having public IP address also, right? And there is going to be one-to-one mapping between private IP and public IP, right? Private IP हमेशा होगा, right? ये जो भी एड्रेस ब्लॉक है ये पूरा प्राइवेट है, and there is one-to-one mapping between public and private IP. ये आपको पता है, right? इसे हम बोलते हैं NAT, and this mapping information is all there in the gateway. ये mapping information gateway में ही होती है, okay? प्राइवेट वीएम को अगर हम पब्लिक आईपी देते हैं तो भी उसका कोई यूज होने वाला नहीं है, right? Because there is no communication, there is no connectivity. So private VM is going to be really private, right? या private subnet is going to be really private, right? यहाँ पर आप ना तो अंदर से बाहर कम्युनिकेट कर सकते हो और ना ही बाहर से अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, right? लेकिन पब्लिक सबनेट में हम कर सकते हैं, right? Because we have public IP address and we have the root information in the public table. This we are going to verify. ठीक है, हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे. जो प्राइवेट वीएम है आपका उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा टोपोलॉजी हम बनाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस. सपोज यू हैव डाटाबेस सर्वर्स जैसे ओरेकल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है, उन्हें अगर हमें सिक्योर रखना है तो यूजुअली वी प्लेस देम इन द प्राइवेट सबनेट वेयर योर वीएम्स योर सर्वर्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू द इंटरनेट. इंटरनेट जो है वो आपका एक अनसिक्योर नेटवर्क है, रिस्की नेटवर्क है, right? So we tend that the crucial resources like database servers should not be exposed to the internet. तो अगर हमने database server यहाँ पे रखे हुए हैं प्राइवेट सबनेट पे तो डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है. हाँ, इनडायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, राइट? सो दैट वे वी आर इंट्रोड्यूसिंग सिक्योरिटी, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करना पॉसिबल नहीं है. So if you really want to access these private VMs, so from here, first of all, you need to make an access to the public, and from public VM, you can make internal access based on private IP address, but direct access is not possible. This we are going to verify. तो ये हमारा custom VPC है, right? Default VPC हम already use कर चुके हैं. Everything is there in place, but custom VPC we're designing in our own way, right? We're going to have our own subnet, our own addressing, right? Own root information. ठीक है? Is this clear? ये हम करने जा रहे हैं. ये एजेंडा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Alright, चलिए, let's log in. So go to VPC, right? Or else you can make a search. If you're doing it for the first time, यहाँ पे आप सर्च कर लो VPC, right? Right to virtual private cloud. This is the dashboard, VPC dashboard. इसमें हम देख सकते हो जितने भी resources associated हैं with this VPC, they are all listed, right? VPC, subnets, root table, gateways, right? Net gateway, peering connections, ACL, security groups, ये सब component है VPC के, which are all associated. चलिए, let us start your VPC. यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर वो आपको शो करेगा default VPC. Initially मैंने आपको बताया था, right? When you create your account, AWS account, so a default VPC is there created for you in every region. So right now I'm working in North Virginia region, and this is the default VPC. Default CADR है इसका 172.31.00/16, right? And this VPC is divided into subnets. Go to the subnet option. And here actually you will see we have got 6 subnets, right? One subnet is there in one zone. ये जितने भी subnets हैं, they all belong to the same VPC. ये VPC ID है, right? F744. हम देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये जितने भी सबनेट्स हैं, they all belong to the same VPC. और ये है उनके CADR block. Subnetting is performed using CADR block /20, right? जो default VPC है उसका CADR है /16.
लेकिन जो सबनेटिंग किया है वो है /20, राइट। तो ये CATIA ब्लॉक्स हैं, 1 फॉर एवरी सबनेट, और /20 का मतलब है देर आर गोइंग टू बी 12 होस्ट बेड्स. 12 host beds you are getting these many addresses per subnet, और ये जितने भी सबनेट हैं they belong one subnet in one zone. आप देख सकते हैं सभी जोन यहाँ पे लिस्टेड हैं, 1A, 1B, C, D, E and F. So one default subnet is there in one zone. ये डिफॉल्ट सेटअप है, राइट. /20 का CADR ब्लॉक है यहाँ पर. लेकिन अब हम अपना खुद का VPC क्रिएट करने जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट. चलिए, सो बैक टू VPC, create VPC, like provide the details, name tag for your VPC. Here I name it as a custom VPC. Okay. CADR block हमने सोचा है 10.0.0.0/16. The CADR block what we are planning. All right. So 10.0.0.0/16. TNC is default. ऐसे रखिए उसको. Create VPC. अब जैसे हम VPC create करेंगे, there are certain components which are getting created with this VPC by default. Let us see. Here I go. Create VPC. This is created. Right. ये VPC ID है. Right. 03FD. Status is available. DNS host name disable है, फिलहाल जरूरी नहीं है. लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं ये देखिए, DHCP ऑप्शन सेट, मेन रूट टेबल एंड नेटवर्क ACL, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गए. अलॉन्ग विद दिस, ये हमने क्रिएट नहीं किए हैं, ये अपने आप क्रिएट हो गए हैं. एंड वन मोर कंपोनेंट इज देयर, दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप. गो टू सिक्योरिटी ग्रुप. ये मैं दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, एंड आई विल शो यू दैट दिस सिक्योरिटी ग्रुप बिलोंग्स टू दिस VPC 3AFD. ये देखिए, ये VPC ID है 3AFD. तो ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है इस VPC को बिलोंग करता है. इसके ऊपर वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो डिफॉल्ट VPC को बिलोंग करता है. सो हर VPC का अपना एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है. तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया. यस, यस, इज दिस क्लियर? सो 4 कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गए हैं. वन इज द DHCP ऑप्शन सेट, मेन रूट टेबल, नेटवर्क ACL एंड डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप. इस डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप इनबाउंड रूल्स चेक करोगे, इनबाउंड रूल्स, एडिट इनबाउंड रूल्स, ये देखिए क्या बताता है. ये डिफॉल्ट है. All traffic is permitted for all protocols, all ports, but source is security group itself. Right? ये security group का ID है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो. D5601, वही है ना. ID से ही पता चलता है कौन सा security group है. Meaning, all those resources which belong to the same security group, they are permitted for all traffic. Whereas everything else is denied. Right? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सिक्योरिटी ग्रुप का बिहेवियर है वो क्या है, इट डिनाइज एवरीथिंग एंड इट परमिट्स ओनली दोज थिंग्स व्हाट यू स्पेसिफाई. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज परमिटेड, but it is permitted between those resources which belong to the same security group. It means that traffic arriving from internet, that's going to be denied. Yes. तो अगर हमें इसको चेंज करना है बिहेवियर को, हम कर सकते हैं. अगर मान लीजिए मुझे ऑल ट्रैफिक अलाउ करना है, कर सकते हैं. जो भी आप रूल ऐड करोगे, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, नया रूल ऐड कर देते हैं. मान लीजिए मुझे ऑल ट्रैफिक परमिट करना है, मेक ए सर्च ऑल ट्रैफिक, राइट, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट, सोर्स. ये सोर्स है. 000 मीन्स एनीबडी. सो एनीबडी इज अलाउड फॉर ऑल ट्रैफिक. सेव द रूल. दिस इज इनबाउंड रूल. हमने इसको एडिट कर दिया है सिक्योरिटी ग्रुप का, राइट. इसमें ऑल ट्रैफिक परमिट कर दिया है. आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अलाउड. आप देख सकते हैं ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट्स, destination is any, right? So all traffic is permitted for any destination outbound. ठीक है. Yes. So this is your custom VPC. ये 4 कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं. अब क्या करना है,
as per the planning, we have to create two subnets. This is my custom VPC. इसमें हम दो सबनेट क्रिएट करेंगे. So now go to the subnets. Right, ये default subnets है. We are going to create our own custom subnets. So in which VPC you have to create? You have to create a custom VPC. सबनेट का नाम हमने सोचा है, सबनेट का नाम पब्लिक सबनेट. पब्लिक सबनेट जोन. हाँ, जोन क्या सोचा है? 1A पब्लिक सबनेट. you're going to place it in 1A zone, right? So 1A CRA block. CRA block we are planning 10.0.10/24. That's what we are planning. Therefore 10.0.1.0. Okay, that's all. Create subnet. All right. Similarly, create one more subnet in the same VPC, custom VPC. सबनेट का नाम हमने सोचा है प्राइवेट सबनेट. जोन we are planning to have it in 1B zone. देख लीजिए आप, 1B zone private subnet 10.0.20/24, right? So private subnet 1B zone, CIDR is 10.0.20/24. Create. All right. तो ये दो सबनेट हमने क्रिएट कर दिए, पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट. ये सबनेट आईडीज हैं, दे बिलोंग टू द सेम VPC, कस्टम VPC. both of these subnets, बाकी सब डिफॉल्ट सबनेट्स हैं नीचे. ये CIDR ब्लॉक है 1.0, 2.0, 251 are the address is available per subnet. 1A zone, 1B zone, public subnet in 1A zone. वहाँ क्या है? मेन रूट टेबल. ये जितने भी सबनेट्स हैं, they are associated with the main root table, same, right? ये हम बदल देंगे. We are going to have our own custom root table. Public root table हम बनाएंगे, private root table बनाएंगे. अभी क्या है? By default ये जितने भी सबनेट्स हैं, they are associated with main root table, right? ये main root table है. And every subnet has got network ACL, right? This is default network ACL, which permits all the traffic. ये default subnet नहीं है, right? नीचे के सारे सबनेट डिफॉल्ट है, लेकिन ये हमने जो क्रिएट किए डिफॉल्ट सबनेट नहीं है. ऑल ऑफ इन पब्लिक आईपी एड्रेस नो है बाय डिफॉल्ट, राइट? यहाँ पर पब्लिक एड्रेस डिफॉल्ट सबनेट में असाइन हो जाते हैं. तो ये जो पब्लिक सबनेट है इसको अपन यस कर देते हैं, राइट? ये ऑप्शन को चेंज कर देंगे. कैसे? गो टू द एक्शन, एडिट सबनेट सेटिंग, और यहाँ पर इनेबल ऑटो साइन मदनपुर एड्रेस, इसे इनेबल कर दो. ओनली फॉर पब्लिक सबनेट. हमें चाहिए कि पब्लिक सबनेट में जब भी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तो पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन होना चाहिए. Let us see. Yes, this is changed, right? Fine. All right, सबनेट हो गए. अब क्या करना है? We will be creating two root tables. One is public, other one is private. क्रिएट करने के बाद हम इसको एसोसिएट करेंगे. Public root table to be associated with public subnet and private root table to be associated with private subnet, right? चलिए, so go to the root table. यहाँ पर डिफॉल्ट रूट टेबल है इस वक्त, मेन रूट टेबल जिसको बोलते हैं. दोनों ही मेन रूट टेबल है, बट वन ऑफ द रूट टेबल इज डिफॉल्ट VPC और ये है कस्टम VPC. ये जो रूट टेबल है ये कस्टम VPC का रूट टेबल है.
राइट। इसमें अगर आप रूट्स देखेंगे, रूट्स देखिए, so local root is there in custom VPC, sorry, in this main root table, local root is there. Or subnet association, by default all the subnets are associated with the main root table. पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ये सब मेन रूट टेबल से अभी एसोसिएटेड है, राइट। फिलहाल का सिनेरियो ऐसा है, और ये जो मेन रूट टेबल है इसमें लोकल रूट है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, एज पर द प्लानिंग हम अपना खुद का रूट टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे पब्लिक रूट टेबल। चलिए, क्रिएट रूट टेबल, नेम पब्लिक रूट टेबल, in which VPC, custom VPC of course, create, right। Similarly, ये पब्लिक रूट टेबल है। Similarly, create one more root table, इसको नाम दे देते हैं प्राइवेट रूट टेबल। This private root table, once again in custom VPC, create, हमने दो रूट टेबल क्रिएट कर दिए, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट। पब्लिक रूट टेबल का हालचाल देख लो आप, क्या है। सपोज यू चेक फॉर द रूट्स, लोकल रूट इज ऑलवेज देयर, और सबनेट एसोसिएशन नथिंग, जीरो। Similarly, private root table, subnet association is 0 and root, local root is there. So दोनों ही रूट टेबल में लोकल रूट है, और दोनों ही रूट टेबल अभी किसी भी सबनेट से एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएशन करना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा, पब्लिक क्या रूट है? टेबल को, यस बोलिए क्या बोल रहे हैं। लोकल रूट क्या है? लोकल रूट क्या है, क्या सवाल है मैं आपका, भूल गया एक्चुअली। आपने रिवीजन ही नहीं किया है। हाँ, रिवीजन करना चाहिए, सब बताया हुआ है। लोकल रूट इज बाय डिफॉल्ट देयर, which allows communication between the resources within the VPC. Within the VPC communication by default होता है, just because local root is there। जैसे आप रूट टेबल बनाते हो, लोकल रूट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। डिफॉल्ट रहता है। ओके ओके। इसे ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओके। अगर आप देखेंगे तो लोकल रूट हमेशा रहेगा, और उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एडिट रूट के अंदर मैं जाता हूँ तो आप देखिए डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, आपने खुद का अपना नया रूट बनाना है तो वो रिमूव करने का ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन लोकल रूट को रिमूव करने का कोई तरीका नहीं। डिफॉल्ट लोकल रूट को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, उसको ओके। मॉडिफाई कर सकते हैं ना डिलीट, कुछ भी नहीं कर सकते, इज ऑलवेज देयर, राइट। तो दोनों ही रूट टेबल में लोकल रूट तो है, लेकिन अभी सबनेट कोई एसोसिएटेड नहीं है, तो सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सबनेट को, पब्लिक रूट टेबल को पब्लिक सबनेट से एसोसिएट करना है। पब्लिक रूट टेबल टू बी एसोसिएटेड विद पब्लिक सबनेट, और प्राइवेट रूट टेबल टू बी एसोसिएटेड विद प्राइवेट सबनेट, ऐसा करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पब्लिक रूट टेबल, सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और किससे एसोसिएट करना है, पब्लिक सबनेट के साथ। सिलेक्ट दिस वन, सेव इट, राइट। So now it is associated. So flash public root table, सबनेट एसोसिएशन अभी ठीक है। पब्लिक सबनेट, जो पब्लिक रूट टेबल है ये पब्लिक सबनेट से हमने एसोसिएट कर दिया है, राइट। लेकिन प्राइवेट रूट टेबल अभी नहीं है, इसको भी कर देते हैं। सो गो टू एडिट सबनेट एसोसिएशन, एसोसिएट विद प्राइवेट सबनेट, सेव एसोसिएशन, फ्लैश। ये देखिए, so private root table is associated with private subnet, ओके। ये दोनों काम हो गए। अब लास्ट क्या रह गया है, हमें क्रिएट करना है इंटरनेट गेटवे।
और एसोसिएट करना है वीपीसी के साथ। चलिए, इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इसको नाम दे देते हैं अपन कस्टम इंटरनेट गेटवे, IGW इंटरनेट गेटवे, दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज क्रिएटेड कस्टम गेटवे, ये भी अटैच्ड है, किसी वीपीसी को अटैच नहीं है, अटैच करना पड़ेगा। तो गेटवे हम हमेशा वीपीसी को अटैच करते हैं, सबनेट को नहीं। ओके, चलिए, सो गो टू द एक्शन, अटैच टू वीपीसी, and this is the only VPC available, custom VPC attached gateway, and it is attached now. Okay, it is attached. और क्या रह गया है? Now just to ensure कि public subnet, the sources should be able to communicate outside. root चाहिए कहाँ पर? Public root table, right? root हमें बताना पड़ेगा कि any traffic destined for the internet should go to the gateway. That's how we tell the root. So go back to the public root table and add a root. Root table में जाएंगे, more specific public root table, go to the roots, added roots, right? Add the root. Destination any. कहीं भी जाना है तो कहाँ जाना है? Go to gateway. Internet gateway, this one. This is the internet gateway, custom. Fine. Save the root. So now public root table में दो तरह के रूट्स हो गए हैं, एक है local root और the roots. One is the local root by default, and other one is the default root which says traffic destined for anywhere go to gateway. And anything forwarded to the gateway, meaning internet. Yes, infra is ready, right? पूरा infra ready हो गया. And now we are going to verify the things. हम क्या करेंगे? We'll place two virtual machines, EC2 instances. One is public VM in public subnet, private VM in private subnet. ठीक है, ये हम डिप्लॉय करते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्यों. ओके, चलिए, सो क्रिएट two instances. So I go to EC2. Okay. Launch instance. इस इंस्टेंस को नाम दे देते हैं पब्लिक VM. OS इमेज Amazon लिनक्स से ले लेते हैं अभी. ये भी दे सकते हैं, ठीक है, हमें पिंग करके देखना है, डजंट मैटर. Let's take second one, Linux 2. Instance type T2 micro is okay. Key where we can use the same key. नेटवर्क सेटिंग, यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है. गो टू एडिट ऑप्शन, डिफॉल्ट VPC नहीं, अब हम यूज करेंगे कस्टम VPC, राइट? दिस इज लिस्टेड नाउ इन कस्टम VPC, राइट? यहाँ दो सबनेट है, वी आर गोइंग टू प्लेस दिस EC2 इंस्टेंस इन पब्लिक सबनेट, पब्लिक IP एड्रेस इनेबल्ड है, राइट? बाय डिफॉल्ट हमने इनेबल किया था ना ऑप्शन, इसलिए इनेबल बता रहा है. सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग, we will be using default security group जिसको हमने edit किया है, all traffic allow कर दिया है इसके अंदर, storage 8 GB, right? तो we are deploying one instance in public subnet, right? Amazon Linux launch. Similarly, we will launch one more instance. इसे नाम दे देते हैं private VM. This private VM will be in private subnet.
OS image same, Amazon Linux 2 ले लेते हैं. Instance type T2 micro, key pair is same. Network settings, take care. We're going to place everything in the custom VPC. In custom VPC, private subnet, private VM in private subnet, public IP address is disabled. लेकिन अगर हम enable भी करते हैं तो भी उसका कोई काम नहीं है, right? It won't work. अगर आपको देखना है तो देख लेते हैं, right? It's going to be simply based on public IP address, but just for practical purpose, I'm going to show you that public address किसी काम का नहीं है because we don't have any root. Permission same, default, all traffic allowed. That's all. Storage 8 GB. Launch. ओके, और अब ये जो पब्लिक वीएम है, आप देख सकते हैं इसमें दो आईपी एड्रेस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. थर्ड आईपी एड्रेस है 10.1.245. इस रेंज में से 10.1.245 इसको लिख देता हूँ. थर्ड आईपी एड्रेस is 10.1.245, right? And similarly और उसको पब्लिक एड्रेस भी है 54, 235, 228, 37. This is the public IP address. This is one-to-one mapping 54.235, 228, 37. Right? Applied IP address is 10.1.245. Similarly, जो प्राइवेट VM है इसका IP address होगा 10.0.2 dot something. 10.0.2 dot, let's see what is the address. Private VM 244. पब्लिक IP एड्रेस इसको दिया है लेकिन ये किसी काम का नहीं है. लेट अस सी, मैं आपको बताता हूँ. 244 that's 244, right? We are sitting here right now. हम यहाँ पर. अब यहाँ से अगर मैं इस पब्लिक एड्रेस को पिंग करता हूँ तो ये होना चाहिए. अगर ये पिंग हो गया पब्लिक एड्रेस, इसका मतलब आपको तो कनेक्टिविटी है, रूट्स हैं, सिक्योरिटी, सब कुछ प्रॉपर है, राइट? बट प्राइवेट वीएम का भी पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसे अगर हम पिंग करेंगे तो वो नहीं होगा, राइट? आउटसाइड से इनसाइड आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ रूट नहीं है. चलिए लेट अस वेरीफाई. सो मैं पब्लिक वीएम, ये पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको जरा मैं पिंग करता हूँ अपनी मशीन से. पिंग पब्लिक आईपी एड्रेस, दिस इज पिंगिंग. इसका मतलब एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस, राइट? माय टोपोलॉजी इज वर्किंग फाइन. अभी जो मैंने टोपोलॉजी डिजाइन किया है वीपीसी का, ये सही है, कोई इसमें गलती नहीं है अभी, राइट? प्राइवेट वीएम का ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये काम नहीं करेगा. चलिए इसको भी देख लेते हैं. दिस द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ प्राइवेट वीएम. here I say ping, direction not working, right? This proves that बाहर से अंदर आना पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्टली. और ये जो पब्लिक एड्रेस हमने एनेबल कर दिया है ये वेस्ट है, राइट? क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं है, राइट? कोई रूट ही नहीं है. ओके, दिस इज ए फेलियर, ऑल पैकेट्स आर लॉस्ट. अब क्योंकि ये कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर, राइट? आई एम एबल टू पिंग फ्रॉम हियर टू दिस पब्लिक आईपी एड्रेस. सो
I can do SSH also, right? Actually, let us do SSH, right? So once again, I pick up this public VM, this is the public IP, do SSH, open the connection, yes, हो रहा है, username, and authentication is based on key, this is successful. आप देख सकते हैं ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.0.1.245. Yes, is this clear? So right now you are here 10.0.1.245 is this VM, right? From here, if I ping to this private VM, ये हो जाएगा 10.0.2.244. इस VM से अगर मैं बोलता हूँ ping 10.0.2.244, successful, right? From here, if you ping outside, मैं अभी पब्लिक VM पर हूँ, मैं यहाँ पर अगर बाहर इंटरनेट पर कहीं भी कम्युनिकेट करता हूँ वो भी हो जाएगा. Then I say ping google.com. All right. Is this clear? Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ से देखिए प्राइवेट वीएम को डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट पॉसिबल है. मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है प्राइवेट आईपी एड्रेस पर, राइट? 10.0.2.244 ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये कम्युनिकेशन हो रहा है. अब क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है तो मैं यहाँ से SSH भी कर सकता हूँ. डायरेक्ट SSH तो नहीं होगा, यानी बाहर से अगर मैं SSH यहाँ से करना चाहूँ ये पॉसिबल नहीं है, राइट? लेकिन अगर मैं SSH यहाँ से करता हूँ, राइट, ये हो जाएगा, होना चाहिए. ओनली मिसिंग पार्ट इज द की. प्राइवेट की यहाँ पे नहीं है, ठीक है? की इज मिसिंग आउट है. की यहाँ पर है मेरे पास. ओके, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पिक अप दिस की एंड पेस्ट इट हियर. कॉपी पेस्ट कर देंगे. कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू क्रिएट ए फाइल यूजिंग VI एडिटर. VI फाइल का नाम दे देता हूँ मैं डेमो की, राइट? ये एडिटर ओपन हो गया. कीज मेरे पास यहाँ पर है, राइट? मैं अभी ये वाला की यूज कर रहा हूँ, NV की पेन, ये वाला. इसको मैं ओपन करता हूँ. ओपन विथ नोटपैड, राइट? Select this key, Control C and right click here. बस, ठीक है? की सेंसिटिव याद रखिए, जरा भी स्पेस वगैरह कुछ आ गया वो करप्ट हो जाएगा. सेव इट एज इट इज, फुल कोलन WQ, की इज सेव्ड. लिस्ट, दिस इज द डेमो की, राइट? इसकी परमिशन चेंज कर दो. चेंज मोड 400, नेम ऑफ की, परमिशन इज चेंज, रीड ओनली कर दिया उसको, राइट? सो नाउ आई हैव द की ऑन दिस पब्लिक VM. अब मैं यहाँ से अगर प्राइवेट VM को SSH करना चाहूँ तो कर पाऊंगा, राइट? की इज देयर विद मी. SSH करने के लिए कमांड है SSH. यूजर नेम इज EC2-user @ private IP address 10.0.2.244. This is the private IP address of private VM. Then -I and private key. Private key क्या है? Demo key, right? This is the way. Do SSH through command. Enter. Are you sure you want to continue connecting? Say yes. And here we are inside. आप IP address पढ़ सकते हो 2.244. ये है आपका प्राइवेट VM, राइट? दिस इज इनडायरेक्ट एक्सेस, राइट? अब यहाँ से अगर मैं इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना चाहूँ यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं. आई एम हियर राइट नाउ, आई एम ऑन प्राइवेट VM. If I try to communicate outside, चलिए देखते हैं. ping google.com, right?
दिस इज नॉट हैपनिंग। सो कहने का मतलब क्या है, ना तो आप बाहर से अंदर आ सकते हो, ना अंदर से बाहर जा सकते हो। ठीक है, नो वे, जस्ट बिकॉज, जबकि उसको पब्लिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है तब भी वो किसी काम का नहीं है। राइट, वैसे तो देना ही नहीं चाहिए था। राइट, लेकिन यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो हो जाता है पब्लिक वीएम से। उसको रोकने के लिए फैस कंट्रोल सी, राइट, ऑल द पैकेट्स आर लॉस्ट, 31 पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड। ये पैकेट जब तक भेजता ही रहा है एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स, 100% लॉस। ओके, अब ये एसएसएस सेशन को ब्रेक करना है, से एग्जिट। एग्जिट करने से सेशन ब्रेक हो जाएगा एंड आई एम बैक टू पब्लिक वीएम। कनेक्शन इज क्लोज, राइट, आई एम बैक ऑन दिस पब्लिक वीएम। यहाँ आईपी एड्रेस से पता चलेगा आपको 1.245, यहाँ पर हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं बाहर कम्युनिकेट करता हूँ पिंग google.com, ये मैंने आपको बता दिया है, ये हो जाएगा। चलो, इज दिस क्लियर? दिस इज कस्टमाइजेशन। अब ये डायग्राम आप देख लो फिर से और समझ लो, कुछ अगर क्लियर नहीं तो पूछो। सर अभी जो प्राइवेट वीएम को इंटरनेट से किए थे कनेक्ट, वो समझ नहीं आया। प्राइवेट वीएम को इंटरनेट से नहीं किया हमने, प्राइवेट वीएम को हमने एक्सेस किया पब्लिक वीएम से। पहले हमने क्या किया, लॉग इन किया। यहाँ से मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा मशीन है, यहाँ से मैंने यहाँ लॉग इन किया, एसएसएच किया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ लॉग इन किया। यस सर। दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? ये सेम प्रोसेस हम लोग विंडोज मशीन में भी यूज करेंगे ना? विंडोज में कर सकते हो, आरडीबी करना पड़ेगा। विंडोज को भी थोड़ा स्लो होता है, इसलिए मैंने आप लिनक्स एक बार यूज किया। करके दिखाओगे क्या अभी? इसमें क्या है, आरडीबी करो, आप खुद करो उसको, आरडीबी तो करना है। ओके। अगर आपने एक भी लैब नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। पुरानी लैब सारी होनी चाहिए आपकी। हम्म। लिनक्स और विंडोज की मैंने 2 लैब्स अलग अलग बताई हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन बताया है, नहीं वेब मतलब सर्वर ये कॉन्फ़िगरेशन। ये पब्लिक टू प्राइवेट में, प्राइवेट टू प्राइवेट। ये जब आप तो वो लैब कर लोगे तो ये भी कर जाओ। फिर अंदर ओके क्या है, ओके। यहाँ पर सारा कम्युनिकेशन प्राइवेट आईपी एड्रेस पे हो रहा है। आरडीबी करना है आपको। आरडीबी करने के लिए क्या करना है, आपको वीएम पर जाना है और वहां से रन में जाके बोलिए MSTSC, ये हो गया चालू, और प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दो, यूजर नेम दे दो, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एसएसएच किया है, अगर विंडोज होगा तो आपको आरडीबी करना है, इतना ही अंतर है। लेकिन वो आप ओके तभी मुकेश, कर मैं पाओगे जब डाउट। पुरानी लैब्स आपने की हुई है। अगर पुरानी लैब्स नहीं की है तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकता है। यस प्रॉब्लम अगर मुकेश। आपका टोपोलॉजी गलत हो गया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। सबसे पहले पिंग करके देखो पिंग हो रहा है कि नहीं। विंडोज के केस में पिंग भी नहीं होगा, क्योंकि विंडोज फायरवॉल होता है। हम्म। विंडोज फायरवॉल पिंग अलाउ नहीं करता है, तो पहले फायरवॉल डिसेबल करो। उसमें वो स्लो भी चलता है और उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू ज्यादा है, इसके लिए मैंने लिनक्स यूज किया है, वो फास्ट हो जाता है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है वीपीसी का। अभी मेरा फोकस वीपीसी पर है, ईच इंस्टेंस पे नहीं है। ईच इंस्टेंस का टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। ओके। तो जब मैं EC2 पे बात कर रहा था तो केवल EC2 पे बात किया, वीपीसी पे बात नहीं किया। तो मैं ओके, इट्स प्योरली लाइक वीपीसी पे बात सिमिलर। कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है दोनों। कौन आइडेंटिकल नहीं है? लाइनक्स एंड विंडोज मतलब सिमिलर हम्म, प्रोसेस है बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। नहीं, राइट। प्रोसेस में कॉन्सेप्ट सेम है। हमें रिमोट ओके। एक्सेस करना है। विंडोज GUI बेस्ड है, लिनक्स CLI बेस्ड है। हम्म। राइट, विंडोज को अगर रिमोट एक्सेस करना है आरडीबी प्रोटोकॉल चलता है। लिनक्स को अगर रिमोट एक्सेस करना है तो टेलनेट भी कर सकते हैं, SSH भी कर सकते हैं। ओके टेलनेट अभी आउटडेटेड हो गए, सिक्योरिटी नहीं है। SSH सिक्योर्ड है, इसके लिए हम SSH करते हैं। ओके। ये सब बताया हुआ है मैंने पहले, हम चीजों को रिपीट करेंगे कोई फायदा नहीं है अभी। ओके, लैब्स करो, लैब्स लैब्स नहीं करोगे तो, लैब्स करना बहुत जरूरी है। टॉपिक खत्म होना है, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी का स्टॉप रिकॉर्डिंग।